Good morning, students. Today we are going to study how to draw an angle bisector using a compass. How to draw an angle bisector using a compass. And what is an angle bisector? I told you previous lecture that angle bisector, एंगल के टू इक्वल पार्ट्स करने वाली रे उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर. So 3 examples I am going to teach you. One is of acute angle, one is of right angle, and the third one will be of obtuse angle. Okay. So first example is 60 degree. First draw an angle of 60 degree and after that draw its angle bisector. Okay. So first we will draw an angle of 60 degree. How to draw an angle of 60 degree? First take your scale and draw a ray of your choice. रे कभी भी गिन के नहीं बनाते हैं. So mark this starting point and on the second side give an arrow. Okay, this is the first step. Second step, this is your starting point. On this starting point, keep the center of the protractor. This point is called the center of the protractor and this line is called as the base of the protractor. समझा? इसको कहते हैं center and इस bottom line को कहते हैं base of the protractor. So where we will keep this center? We will keep it on our starting point. Center को कहाँ रखना है? हमारे starting point पे. And the base of the protractor we will keep on our ray. The base of the protractor we will keep on our ray. After adjusting like this, hold the protractor tightly. इसको tight पकड़ के रखना है. Now, you know that there are two zeros on the protractor. One is on the left side of the center and one is on the right side of the center. So, while drawing the angle, which zero we will consider? The zero where our ray is lying. हमारी ray जो हमने draw की है वो कहाँ है? It is on the right side. Starting point के right direction में हमारी ray है. तो center के जो ये center है इसके जो right में zero है वही लेना है. जहाँ ray है उसी साइड का जीरो लेना है. तो ये जीरो अंदर है तो जीरो से स्टार्ट करो. 10, 20, 30, 40, 50, 60. सो वी विल टेक दिस 60 डिग्री एंड वी विल गिव अ डॉट ऑन दिस लाइन. यहाँ पे भी 60 है पर ये बाहर वाला है. हम अंदर वाला 60 क्यों ले रहे हैं? बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड दिस जीरो विच इज लाइंग ऑन द राइट साइड, means on the side of our ray, and always we should start counting from 0. तो ये 0 हमारे रे के ऊपर है तो काउंटिंग भी यही से स्टार्ट होगी. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Here we have given a dot. Now what we will do? We will join our starting point and we will join this dot of 60 degree. So this is our 60 degree angle. एंगल कैसे ड्रॉ करना समझ गया. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर. सो सी प्रॉपरली. फर्स्ट टेक द कंपास, एडजस्ट द पेंसिल. पेंसिल एंड टिप ऑफ कंपास शुड बी एट द सेम लेंथ. नाउ कीप द कंपास on the vertex. Keep the compass on the vertex and take a suitable distance of your choice. बहुत बड़ा डिस्टेंस भी नहीं लेना है, बहुत छोटा भी नहीं, मीडियम एक डिस्टेंस लेना है और ऐसे एक आर्क ड्रॉ करना है. जस्ट ड्रॉ एन आर्क. ओके, फुल सर्कल नहीं ड्रॉ करना है. सर्कल का एक छोटा सा पार्ट मीन्स आर्क वी हैव टू ड्रॉ. देन mark this point of intersection with a dot and mark this point of intersection with a dot. Okay, so first what we will do, we will give name to this angle. Suppose A B C. ABC is the name of this angle. Then
this point of intersection we will mark with suppose P and this point with Q. Understood? P and Q कहाँ से आया? We kept the compass at vertex and with a small distance we have drawn one arc. Now keep the compass on point Q. Q के ऊपर हमने पहले ही पेंसिल से एक छोटा सा डॉट बनाया है. सो बराबर उस डॉट के ऊपर हम कंपास रखेंगे एंड वी विल टेक अ डिस्टेंस विच इज लेस देन P. P से थोड़ा सा पहले पर हाफ से थोड़ा ज्यादा एंड वी विल गिव वन आर्क हियर. नाउ विदाउट चेंजिंग दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को चेंज न करते हुए P पे रखना है और फिर से एक आर्क बनाना है लाइक दिस. अंडरस्टूड? पहले Q पे रखना है, एक आर्क बनाना है और उसी डिस्टेंस से P पे रखना है और दूसरा आर्क बनाना है. और डिस्टेंस कितना लेना है Q से? P से थोड़ा सा कम. नाउ मार्क दिस पॉइंट, गिव हियर अ डॉट, ओके, एंड give it a name. Suppose this is point O. Now join B and O. Join B and O. So this is our angle bisector. Okay. Now we will measure this. See. See, this is 30 degree, this much part, and again from this point if we measure, then it is also 30 degree. So 60 degree angle के दो equal parts हो गए, 30 degree and 30 degree. Understood how to draw angle bisector? Only 3 steps are there. First one, draw the angle. Second one, draw this arc. Third one, keep on Q one arc, keep on P another arc, and fourth step is join these 2 points. Now in the same way we are going to see for 90 degree. So how to draw a 90 degree angle? First draw a ray. Then mark this starting point and other side give arrow. Now keep the center on the starting point and the base on our ray, exactly like this. Now 90 degree protractor में एक ही बार आता है. So directly take that 90 degree point and join the 2 points with a ray. Now angle bisector. First step, give it a name, suppose X, Y, Z. Okay, keep on Y, take a distance. This is very big, so we will make it little bit small and draw an arc. Mark these points of intersection. Okay, give it a name. Suppose here we will take L, here we will take M. Now keep the compass on point M and take a distance close to L, less than L, and give an arc. Keep on L with same distance, give an arc. Mark the point of intersection of the arc. वहाँ पे एक डॉट बनाना है. Give it a name. Suppose N. नाम अपने मन से आप कोई भी दे सकते हैं. Now join the point Y and the point N. Y and N को join कर देंगे. This is the angle bisector. Now what is the half of 90? 45 degree. So we will see. This is 90 degree. So see here, this is 40 and 5 lines after 40 means it is 45 degree. Means this angle is divided into
two equal parts. Now the last example we will take for 130 degree. So first draw an angle. For that, first draw a ray. Mark the starting point. Keep the protractor on the starting point and the base on our ray. Now our ray is on right side. So 0 also we will take off right side. Start counting from 0. अंदर वाले 0 से start करो. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. So ये हम लेंगे 130. Remember 130 is a obtuse angle. So it should be a big angle. It should look like this. So join this. This is your 130 degree angle. Give it a name. Suppose L M N. Now keep the compass on point M. Vertex पे compass रखेंगे and with a suitable distance we will draw one arc. Then give names to these 2 points of intersection. ओके अच्छा छोटा सा ऐसे गड्ढा जैसे बनाना मीन्स जब हम वहाँ कंपास रखेंगे तो वो उस पॉइंट में फिक्स हो जाएगा और हिलेगा नहीं. सो सपोज हियर वी गिव नेम ए एंड बी. नाउ कीप द कंपास ऑन बी एंड हाउ मच डिस्टेंस वी विल टेक नियर टू ए से थोड़ा सा कम and we will draw an arc above. Again with same distance we will keep on A and we will draw an arc. Distance हिलाना नहीं है. जितना B पे रखने के बाद लिया था उतना ही रहना चाहिए A पे रखने के बाद. Then mark this point of intersection, suppose O, and join M and O. Join M and O. So this becomes your angle bisector of the angle LMN. MO is the angle bisector of the angle LM and N. Understood? So today's homework is practice set 3. See here, practice set 3. Use the proper geometrical instruments to construct the following angles. Use the compass and the ruler to bisect them. Okay, so these 4 angles you have to draw and then you have to draw the angle bisector for these 4 angles. Okay, understood the homework? Thank you.